In the name of Allah, who is the most compassionate, the most merciful. Assalamu alaikum and good morning, my dear students. I am your teacher, Miss Sama Mirza, and I am here to help you learn. I hope you're also all well and ready for an exciting learning experience. So, dear students, today we are going to read a beautiful and simple poem called Loveliest of Trees, The Cherry Now by A. Houseman. A. Houseman was an English poet and he was born in England in 1859 and died in 1936. And his poem is about a cherry tree in full bloom and how the poet feels when he sees its beauty. So, today we'll talk about what makes this tree special and why the poet believes it's important to enjoy every moment of life. Are you ready to discover why the cherry tree is so lovely? Let's get started. First of all, I'll read this poem stanza wise and translate into Urdu for you also. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough and stands about the woodland ride, wearing white for Easter tide. So, dear students, in these lines, the poet describes the beauty of cherry tree. According to the poet, cherry tree is the loveliest of all the trees, and there are plenty of flowers on it. It is standing on the way that goes to woodland, and it is covered with white flowers. It looks to be dressed up white for Easter event. And Easter is the festival of Christians. They celebrate it in the month of April when there's spring season. So, I'll translate it into Urdu. Loveliest of trees, दरख्तों में से सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा द चेरी नाव अब चेरी का दरख्त है इस हंग जो लदा हुआ है विद ब्लूम फूलों से अलोंग द बो जिसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं एंड स्टैंड्स और खड़ा है अबाउट द वुडलैंड राइट वुडलैंड मीन फॉरेस्ट जंगल एंड राइड घुड़सवारी को कहते हैं सो एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड कि जो चेरी का खूबसूरत सबसे खूबसूरत दरख्त है जिसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं वो घुड़सवारी के रास्ते पर जंगल में खड़ा है वेयरिंग वाइट और उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है फॉर ईस्टर टाइड ईस्टर के त्यौहार के लिए यानी पोइट को ये लग रहा है कि वो जो चेरी का दरख्त है जंगल के रास्ते में जो खड़ा है उसने सफ़ेद रंग से वो ढका हुआ है सफ़ेद रंग के फूलों से और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ईस्टर के लिए वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है I have a picture to share with you. Look at that. These are all cherry trees and these are hung with bloom. And now there is the second stanza. Now of my 80 and 10, 20 will not come again. And taken from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And in these lines, the poet calculates his life. He says that a man's life is 70 years according to Bible. He has spent 20 years that will not come again in his life. Here the poet regrets that his 20 years have passed without enjoying the beauty of cherry tree. And he is so captivated by the beauty of cherry tree that he considers a very short period remaining, 50 years of his life, to enjoy the beauty of cherry tree. Now listen its Urdu translation. Now of my 80 and 10, अब
3 score, score is equal to 20. 1 score is equal to 20 and 3 scores are equal to 60. Yes. So of my 3 score years mean 60 years and 10. 60 plus 10 is equal to 70. Yes. सो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि अब मेरे 70 सालों में से 20 साल विल नॉट कम अगेन, दोबारा नहीं आएंगे. इट्स मीन कि जब पॉइंट ने ये पोम लिखी है, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. सो ही वॉज सेइंग दैट 20 विल नॉट कम अगेन, कि मेरे जो 70 साल हैं, यानी क्रिश्चियंस के जो बुक है बाइबल, उसमें उनका अकीदा बिलीफ ये है कि एक इंसान की जो एवरेज एज है वो 70 ईयर है. ठीक है. तो पॉइंट भी चूँकि क्रिश्चियन था, इस वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे जो 70 साल हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ज़िंदगी के 70 साल दिए हैं, उसमें से तो 20 साल गुजर चुके हैं. यानी पॉइंट 20 साल का है, तो इट्स मीन 20 साल गुजर चुके हैं. इसलिए वो कह रहे हैं 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल नहीं आएंगे. एंड टेकन फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर. टेकन और ले लिए जाएं फ्रॉम 70 स्प्रिंग, 70 बहारों में से. अ स्कोर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्कोर मीन 20. यस. तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं? एंड टेकन फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आर स्कोर. कहते कि अगर मेरी ज़िंदगी के 70 साल थे, तो हर साल में स्प्रिंग सीजन कितनी दफ़ा आता है? 1 टाइम. यस, वेरी गुड. और 70 साल में स्प्रिंग सीजन कितनी बार आएगा? 70 टाइम. दैट्स वेरी गुड. ओके. एंड टेकन फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर. यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी के 70 साल थे और 20 साल मैंने गुजार लिए हैं, इट्स मीन उसमें से आप 20 बहारें चली जाएं. यानी 20 बहारें जो हैं वो मैंने इन्जॉय नहीं की, वो चली गई हैं. इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. इट ओनली लीव्स मी, तो मेरे पास बच जाती हैं 50 मोर, सिर्फ 50 और बहारें. इज दैट क्लियर? यानी क्रिश्चियंस का बिलीव है कि हर इंसान की जो एवरेज एज है वो कितनी है? 70 ईयर्स. और पॉइंट कह रहा है कि मैं अब 20 ईयर्स का हो गया हूँ, मीन्स मेरी 20 ईयर्स गुजर चुके हैं. और अगर मेरी एज 70 ईयर्स है, तो उसमें स्प्रिंग सीज़न कितनी बार आना था? 70 टाइम्स. सो अगर पॉइंट के 20 साल चले गए हैं, तो मीन्स वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की 20 बहारें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, वो दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे. तो अब पॉइंट के पास कितना अरसा है, कितनी स्प्रिंग सीज़न देखेगा वो? अप्रॉक्सीमेटली 50. सो दैट्स वाई इन दिस लास्ट लाइन ही वाज सेइंग दैट इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, कि अब मेरे पास सिर्फ 50 बहारें बाकी बची हैं. I hope so it's clear. So let's go to the third and last stanza. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodland I'll go to see the cherry hung with snow. And in these lines, the poet describes that he has left 50 years of life. Since 50 years are not long enough to enjoy the beauty of cherry, so he will go to the woodland to enjoy the cherry tree when it is hung with white flowers. And at this time, it looks like hung with snow. So now listen at Urdu translation. And since और चूँकि to look at things, चीज़ों को देखना, in bloom मीन फुल स्विंग पे, मीन अरूज पे, जौबन पे. पॉइंट कह रहा है कि चीज़ों को पूरी तरह से खिले हुए देखना, पूरे अरूज पे देखना. 50 स्प्रिंग्स, चीज़ों को पूरे अरूज पे, पूरे दरख्तों को पूरे खिले हुए देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स, जो मेरे पास 50 बहारें बची हैं, आर लिटिल रूम, वो बहुत कम अरसा है. लिटिल मीन कम, थोड़ा सा, रूम मीन पीरियड. सो कहता है कि चूँकि चीज़ों को मैंने
दरख्तों को मैंने पूरा खिले हुए देखना था, चीज़ों को मैंने पूरे अरूज पे देखना था। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, इसलिए जो 50 बहारें मेरे पास बची हैं वो बहुत कम अरसा है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, तो फिर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अबाउट द वुडलैंड, कि फिर मैं उसी जंगल में, आई विल गो, मैं जाऊंगा, क्या करने के लिए, टू सी, देखने के लिए, द चेरी, चेरी के दरख्त को, हंग विद स्नो, जो कि अब बर्फ़ से लदा हुआ या ढका हुआ होगा। सो अगेन आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में पॉइंट ये कह रहे हैं कि चूँकि मैंने चीज़ों को पूरी तरह से अरूज पे देखना था, मैंने दरख्तों को पूरा खिले हुए देखना था, इसलिए जो 50 बहारें मेरे पास बची हैं, मीन्स जो मेरे पास 50 साल ज़िंदगी के बचे हैं, और लिटिल रूम, ये बहुत कम अरसा है, इट्स वेरी अ शॉर्ट पीरियड। सो अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहते हैं कि इसलिए मैं चेरी के दरख्तों को बर्फ़ से लदा हुआ देखने के लिए दोबारा से जंगल में जाऊंगा। सो आई होप सो दिस इज़ क्लियर। And now what will you have to do? You will have to do, you will have to read this poem, and there are some words to know that you will write it in your notebooks. The first word is bough, means a large branch. Eastertide means festival of Easter, three score and year. Three score and 10, that I've explained you earlier. Score is equal to 20. 1 score is equal to 20 and 3 score is equal to 60. 60 and 10, 70 years. Woodland ride, that means traveling by horse. So, do your work at home in a very good way and learn these words to know. Take care. See you again. Allah Hafiz.